गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सो वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन। आज का पहला टॉपिक है मेंटल हेल्थ गाइडलाइंस। टॉपिक सोशल इश्यूज़ के लिए इंपॉर्टेंट है। सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस इशू की हैं एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को अक्रॉस द कंट्री बिकॉज ऑफ राइजिंग स्टूडेंट सुसाइड केसेस। तो सिस्टमेटिक गाइडलाइंस इशू की गई हैं एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को, क्योंकि ग्रोइंग मेंटल हेल्थ क्राइसिस चल रहा है और उसको सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एक सिस्टमिक फेलियर है, और यूनिफॉर्म इन्फोर्सेबल मेंटल हेल्थ पॉलिसी बनाने को कहा है, जो कि सभी स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़, हॉस्टल्स, कोचिंग सेंटर्स पर एप्लीकेबल होगी। तो अब आपको पता है कि 7.6% जितनी भी सुसाइड्स हो रही हैं इंडिया में एनसीआरबी डेटा के हिसाब से, वो स्टूडेंट्स की हो रही हैं। और स्टूडेंट जो हैं उनको एक रैट रेस में जो है वो ड्राइव किया जा रहा है, जिसकी वजह से जो है एजुकेशन उनके लिए एक प्रॉब्लम बनता जा रहा है। तो कोर्ट ने भी ऑब्जर्व किया है कि एजुकेशन का मतलब लिबरेट करना होता है, बर्डन करना नहीं होता है। तो सुसाइड केसेस जो हैं उनको हम आइसोलेटेड ट्रेजेडीज़ नहीं देख सकते, बल्कि एक कलेक्टिव सोशल फेलियर है ये। तो सुप्रीम कोर्ट ने 15 बाइंडिंग गाइडलाइंस इशू की हैं कि सभी इंस्टीट्यूशन जिनकी 100 या मोर स्टूडेंट्स जिनके पास हैं, उनके पास कम से कम एक क्वालिफाइड काउंसलर, साइकोलॉजिस्ट और सोशल वर्कर होना चाहिए। और इस स्टाफ की ट्रेनिंग जो है वो 2 बार साल में होनी चाहिए एक मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट्स द्वारा। रेजिडेंशियल इंस्टीट्यूशंस के पास टेम्पर प्रूफ सीलिंग फैन होने चाहिए, रिस्ट्रिक्ट होना चाहिए एक्सेस टू रूफ टॉप्स एंड हाई रिस्क एरियाज। और इंस्टीट्यूशंस को कहा गया है कि बैच सेग्रीगेशन एकेडमिक परफॉर्मेंस के बेसिस पर नहीं होनी चाहिए। पब्लिक शेमिंग भी जो है वो स्टूडेंट्स की नहीं होनी चाहिए। इंस्टीट्यूशंस को रॉबस्ट कॉन्फिडेंशियल रिड्रेसल मैकेनिज्म्स भी बनाने पड़ेंगे। कंप्लेंट्स जैसे कि हरासमेंट है, बुलिंग है, ठीक है, किसी भी तरह की डिस्क्रिमिनेशन की है, सेक्सुअल असॉल्ट की है, सभी इंस्टीट्यूशंस को अडॉप्ट और पब्लिश करना होगा एक एनुअल मेंटल हेल्थ पॉलिसी। कोर्ट ने कहा है कि एक नेशनल टास्क फोर्स भी बनाई जाए इंस्टीट्यूशनलाइज करने के लिए स्टूडेंट मेंटल हेल्थ इनिशिएटिव्स को। तो ये जजमेंट डिलीवर की गई है। एक केस था अभी रिसेंटली, एक 17 ईयर ओल्ड नीट एस्पिरेंट विशाखापट्टनम में उन्होंने सुसाइड कर लिया था। तो उनके पेरेंट्स ने सीबीआई इन्वेस्टिगेशन मांगी थी लैप्सेस को देखते हुए स्टेट के पुलिस इंक्वायरी में। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी इन पॉश। टॉपिक सोशल इश्यूज़ के लिए इंपॉर्टेंट है। तो स्टूडेंट एक बालासोर उड़ीसा में सेल्फ इमोलेशन से डाई हुए, जब उनको उनकी जो सेक्सुअल हरासमेंट कंप्लेंट थी अगेंस्ट हेड ऑफ अ डिपार्टमेंट डिसमिस कर दी गई कॉलेज की इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी द्वारा। तो उनकी फैमिली ने कहा कि जो आईसीसी है उनके पास ना तो प्रॉपर ट्रेनिंग है और वो बहुत ही बायस्ड इन्वायरमेंट में वर्क कर रहे हैं। तो जो आईसीसी कैसे बना, विशाखा गाइडलाइन से आया, पॉश एक्ट के। तो फाउंडेशन जो है इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी की, सुप्रीम कोर्ट ने 1997 में रखी विशाखा गाइडलाइंस में। ये गाइडलाइंस डिफाइन करती हैं सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस को। हर कमेटी जो है वो एक विमेन द्वारा हेडेड होनी चाहिए। लेकिन 2012 के निर्भया केस के बाद पॉश एक्ट जब पास हुआ तब मैंडेटरी कर दिया गया सभी वर्क प्लेसेस में जहाँ पर 10 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ हैं कि वो आईसीसी बनाएं। आईसीसी मैंडेटेड है अंडर द पॉश एक्ट और एम्पावर्ड है कि वो एड्रेस करे कंप्लेंट्स ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस। और ये हेडेड है बाय ए सीनियर वुमेन एम्प्लॉय, हेडेड होता है बाय ए सीनियर वुमेन एम्प्लॉय एट द एज द प्रिजाइडिंग ऑफिसर। और एडिशनली वन मेंबर जो है वो एक एक्सटर्नल एक्सपर्ट होने चाहिए। हाफ ऑफ आईसीसी मेंबर जो है वो विमेन होने चाहिए। कोई भी एग्रीव्ड वुमेन जो है वो सबमिट कर सकते हैं रिटर्न कंप्लेंट विद इन 3 मंथ्स ऑफ द इंसिडेंट। कमेटी जो है उनकी सिविल कोर्ट जितनी पावर होती है, अगर उनको जैसे समझ लो किसी विटनेस को सबमिट करना, समन करना है, एग्जामिन करना है एविडेंस, या प्रोसीडिंग्स को कंडक्ट करना है अकॉर्डिंगली। और ये इंक्वायरी उन्हें 90 दिन के अंदर कंप्लीट करनी होती है। एम्प्लॉयर जो है उनको भी, वो भी ऑब्लिगेटेड होते हैं कि वो कंप्लेनेंट को असिस्ट करें। स्ट्रिक्ट कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करनी होती है। लेकिन ये देखा गया है कि इवन 10 ईयर्स के बाद भी इम्प्लीमेंटेशन जो है आईसीसी की वो अभी भी पैची ही है, इनएडिक्वेट है अक्रॉस इंस्टीट्यूशंस। ना तो आईसीसी के मेंबर्स की कोई खास ट्रेनिंग होती है, ना वो कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करते हैं, और बेसिकली जो वर्क प्लेस पावर के इम्बैलेंसेस है उसको भी एड्रेस नहीं कर पाते हैं। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं निसार सैटेलाइट। टॉपिक साइंस एंड टेक के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इसरो ने प्लान किया है कि वो निसार सैटेलाइट को श्रीहरिकोटा से अभी 30 जुलाई को जो है वो लॉन्च करेंगे GSLV MK2 रॉकेट से। और निसार क्या है, वर्ल्ड की फर्स्ट अर्थ ऑब्जर्विंग सैटेलाइट जो ड्यूअल फ्रिक्वेंसी सिंथेटिक अपर्चर रडार पर बेस्ड है, एल बैंड रडार और एस बैंड रडार।
निसार का रडार जो है उसकी स्वैथ जो है उसकी विड्थ होगी जो 240 किलोमीटर्स की होगी, तो ये लार्ज एरिया को एक बारी में स्कैन कर पाएगा और एक स्पेशल रेजोल्यूशन देगा 3 to 10 मीटर्स का। हर स्पॉट ऑन अर्थ जो है वो हर 12 दिन में रिविजिट होगा। निसार जो है उसको डिज़ाइन किया गया है रिसर्च और ऑपरेशन के लिए, सॉलिड अर्थ प्रोसेसेस, इकोसिस्टम्स, आइस एंड स्नो डायनामिक्स, कोस्टल एंड ओशन मॉनिटरिंग, डिजास्टर रिस्पॉन्स, एग्रीकल्चर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। तो निसार जो है वो डैमेज प्रॉक्सी मैप्स भी विद इन 5 आवर्स दिखाएगा। निसार जो है वो अदरवाइज ग्लोबली तो एल बैंड पर ही ऑपरेट करेगा, लेकिन इसरो जो है रूटीनली एस बैंड रडार भी ओवर इंडियन टेरिटरी ऑपरेट करता रहेगा, बायोमास और सॉइल मॉइस्चर मैपिंग को एनहेंस करने के लिए, एग्रीकल्चरल फोरकास्टिंग के लिए। तो इंडिया की जो नेशनल नीड्स है एग्रीकल्चर, डिजास्टर मैनेजमेंट, फॉरेस्ट्री और रूरल डेवलपमेंट, उस सबसे ये अलाइन हो रहा है। निसार को सन सिंक्रोनस पोलर ऑर्बिट में प्लेस किया जाएगा 747 किलोमीटर्स ऑल्टीट्यूड पर। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं IRNSS। ये टॉपिक साइंस एंड टेक के लिए ही इंपॉर्टेंट है। इसरो जो है वो 3 नेविगेशन सैटेलाइट्स लॉन्च करेगा IRNSS के लिए बाय 2026। तो ये इंडिया का रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम है जिसको हम नाविक भी कहते हैं। तो ये रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम जो है ये कॉम्बिनेशन ऑफ जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट और जियो स्टेशनरी ऑर्बिट सैटेलाइट्स का एक सिस्टम है, और ऑफ कोर्स स्टेट ऑफ द ग्राउंड आर्ट सिस्टम्स भी हैं इसमें। तो ये अपार्ट फ्रॉम इंडिया, इंडिया की बाउंड्री से 1500 किलोमीटर दूर तक का रीजन को ये सर्व करता है। 7 सैटेलाइट्स का एक कॉन्स्टलेशन है, ठीक है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी। टॉपिक गवर्नेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। नितिन गुप्ता जो फॉर्मर चेयरपर्सन है थे CBDT के, उनको अपॉइंट किया गया है एज ए चेयरपर्सन ऑफ नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी। तो नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी एक इंडिपेंडेंट रेगुलेटरी बॉडी है। इसका प्राइमरी रोल है कि ओवरसी और इन्फोर्स करना कंप्लायंस विद अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स, इंश्योर करती है हाई स्टैंडर्ड्स इन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इकोसिस्टम, रिकमेंड करती है अकाउंटिंग और ऑडिटिंग पॉलिसीज़ एंड स्टैंडर्ड्स जो कि कंपनीज अडॉप्ट करती हैं फॉर अप्रूवल बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, मॉनिटर करती है, इन्फोर्स करती है कंप्लायंस विद अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, ओवरसी करती है क्वालिटी ऑफ सर्विस ऑफ प्रोफेशंस। तो कंपनीज एक्ट कहता है कि NFRA जो है उसका एक चेयरपर्सन होना चाहिए जो सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करे, और मैक्सिमम 15 मेंबर होने चाहिए जो कि एक्सपर्ट हों अकाउंटेंसी, ऑडिटिंग, फाइनेंस या लॉ में। NFRA के पास पावर है इन्वेस्टिगेट करने की, चाहे सुओ मोटो या रेफरेंस पर, मैटर्स ऑफ प्रोफेशनल और अदर मिसकंडक्ट जो कि कोई भी मेंबर ऑफ CA का करता है, तो या फर्म ऑफ CA का करता है। तो इसके पास सेम पावर्स है जैसे कि एक सिविल कोर्ट के पास होती हैं। तो जुरिस्डिक्शन जो है NFRA की वो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की इन्वेस्टिगेशन और उनकी फर्म्स पर एक्सटेंडेड है, जो कि लिस्टेड कंपनीज भी हो सकती है, लार्ज अनलिस्टेड कंपनी, पब्लिक कंपनीज भी हो सकती हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट भी कुछ मैटर्स इनको दे सकती हैं इन्वेस्टिगेशन के लिए जहाँ पर पब्लिक इंटरेस्ट इन्वॉल्व हो। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं स्कीम फॉर प्रमोशन ऑफ कल्चर ऑफ साइंस। ये टॉपिक आपके साइंस एंड टेक के लिए इंपॉर्टेंट है। यूनियन मिनिस्टर ऑफ कल्चर जो है उन्होंने स्कीम फॉर प्रमोशन ऑफ कल्चर ऑफ साइंस के बारे में राज्यसभा को बताया है, जो कि एक फ्लैगशिप इनिशिएटिव है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर का। साइंटिफिक टेम्पर फॉस्टर करना चाहता है कंट्री में। तो इसके अंदर साइंस सिटीज, साइंस सेंटर्स, इनोवेशन हब्स एंड डिजिटल प्लानिटेरियम्स कई रीजन्स में बनाने का प्लान है। तो इनको सेटअप किया जाता है उन एरियाज़ में जहाँ पर पॉपुलेशन जो है वो 5 लाख से कम है। 27 सच साइंस सेंटर्स जो है वो ऑलरेडी एस्टैब्लिश हो चुके हैं अभी तक। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम। टॉपिक आपके सोशल इश्यूज़ के लिए इंपॉर्टेंट है। तो रीसेंट रिपोर्ट जो है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की और यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम की कह रही है पिछले 90 साल में लगभग 1300 लोगों को जो है वो कंटामिनेटेड मेडिसिन ने मारा है, ठीक है। तो यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम क्या है, इस्टेब्लिश किया गया था 1997 में फाइट करने के लिए इलिसिट ड्रग्स और इंटरनेशनल क्राइम। तो ये एजुकेट करता है पीपल को थ्रू आउट द वर्ल्ड अबाउट डेंजर्स ऑफ ड्रग अब्यूज़, स्ट्रेंथन करता है इंटरनेशनल एक्शन अगेंस्ट इलिसिट ड्रग प्रोडक्शन, और ये वर्क करता है इम्प्रूव करने के लिए क्राइम प्रिवेंशन और असिस्ट करता है विद क्रिमिनल जस्टिस रिफॉर्म। ये रिलाई करता है ऑन वॉलंटरी कॉन्ट्रीब्यूशंस मेनली फ्रॉम गवर्नमेंट्स, ओके। वियना में इसका हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं कॉमेट। ये टॉपिक साइंस एंड टेक के लिए इंपॉर्टेंट है। नासा का हबल स्पेस टेलीस्कोप जो है उसने रिसेंटली फर्स्ट डिटेल्ड इमेजेस ऑफ इंटरस्टेलर कॉमेट जो है वो कैप्चर किए हैं। कॉमेट्स क्या होते हैं? लार्ज ऑब्जेक्ट्स जो कि
डस्ट और आइस से बने होते हैं और वो सन को ऑर्बिट कर रहे हैं। कॉमेट्स जो है मोस्टली जो है सोलर सिस्टम में ही मिलते हैं, लेकिन कुछ जो है वो वाइट डिस्क बियॉन्ड दी ऑर्बिट ऑफ नेपच्यून भी प्रेजेंट है, जिसको हम कुइपर बेल्ट कहते हैं। लेकिन और कुछ ऐसे कॉमेट्स हैं जो ऊट क्लाउड जो है स्फेयर शेप्ड आउटर एज ऑफ सोलर सिस्टम, वहाँ पर भी लोकेटेड है। ठीक है, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं, यूएवी लॉन्च्ड प्रिसीजन गाइडेड मिसाइल V3। टॉपिक सिक्योरिटी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो डीआरडीओ ने अभी सक्सेसफुली फ्लाइट ट्रायल्स कंडक्ट किए हैं अनमैन्ड एरियल व्हीकल लॉन्च प्रिसीजन गाइडेड मिसाइल के। तो ये एक प्रिसीजन गाइडेड एयर टू सरफेस मिसाइल है, हाई एक्यूरेसी के साथ जो है वो स्ट्राइक कर देता है टारगेट्स को। इसको डीआरडीओ के अलावा भारत डायनामिक्स लिमिटेड, अदानी ग्रुप और मल्टीपल एमएसएमईज ने बनाया है। तो ये इसकी मैक्सिमम रेंज 4 किलोमीटर है, 5 kg तक का वेट कैरी कर सकता है ये, अ, और इंटीग्रेट हो जाता है ये लाइट वेट ड्रोन्स के साथ। तो इसको फायर किया जा सकता है प्लेन और हाई ऑल्टीट्यूड एरियाज में, इवन डे और नाइट कैपेबिलिटीज भी हैं इसमें। ओके, सो नाउ लेट अस सी ऑल दीज टॉपिक्स इन इंग्लिश। So the first topic is mental health guidelines. This topic is important for your social issues. Supreme Court has issued mental health guidelines to educational institutions across the country because of rising cases of student suicides. So this needed urgent judicial intervention. So the court has formed a uniform enforceable mental health policy which will be applicable to all schools, colleges, universities, hostels, and coaching centers. And court has said that these mental health crisis is a systemic failure, and these guidelines have been issued by a two-judge bench. So, according to NCRB data, 13,044 student suicides were recorded in 2022, which is basically 7.6% of all suicides in the country. Supreme Court has observed that students are being driven into a rat race, and education, which is meant to liberate, is actually burdening the learner. So, suicide cases cannot be viewed as isolated incidents or tragedies, but rather as a collective social failure. So, in an unprecedented step, court has issued this 15 binding guidelines to be followed until a central regulatory framework is enacted. So, what are the guidelines? All institutions with 100 or more students must appoint at least one qualified counselor, psychologist, or social worker trained in child and adolescent mental health. Staff must be trained twice a year by certified mental health experts. Residential institutions must install tamper proof ceiling fans and restrict access to rooftops and high risk areas to deter impulsive acts of self harm. Institutions were asked to end bench segregation uh, based on academic performance, avoid public shaming, and refrain from setting unrealistic academic targets. Institutions must create robust confidential redressal mechanisms for complaints involving harassment, bullying, caste or gender based discrimination, and even sexual assault. All institutions must adopt and publish an annual mental health policy. Okay. Court has also called for the formation of a national task force to institutionalize student mental health initiatives. So this judgment was delivered in a case involving the suicide of a 17-year-old NEET aspirant in Vishakhapatnam, whose parents sought a CBI investigation after alleged lapses in the state police inquiry. Okay. So the next topic is Internal Complaints Committee in POSH. This topic is important for your social issues. So a student in Balasore, Odisha died by self-immolation after her sexual harassment complaints against the head of her department were dismissed by the college's Internal Complaints Committee. Her family alleged that the ICC lacked proper training and operated in a biased environment. So, what is the legal framework behind ICC? So, the foundation for Internal Complaints Committee was laid by Supreme Court in 1997 through the Vishakha Guidelines. These guidelines defined sexual harassment at workplace and mandated the creation of Complaints Committee to address such cases. Each committee was to be headed by a woman. So these guidelines remained advisory until the 2012 Nirbhaya case, which led to the enactment of POSH Act. So this act made it mandatory for all workplaces within which have more than 10 employees to establish these ICCs. These ICCs are mandated under the POSH Act, and they are empowered to address complaints of sexual harassment at the workplace. It must be headed by a senior woman employee as the presiding officer. Additionally, one member must be an external expert. Half of the ICC members must be women. An aggrieved woman can submit a written complaint within 3 months of the incident. The committee enjoys civil court powers
Under the Code of Civil Procedure, it must complete the inquiry within 90 days. The employer is also obligated to assist the complainant in filing a criminal case if she chooses to do so. Strict confidentiality is mandated by law. Okay, but even after 10 years since the enactment of POSH Act, the implementation of ICC remains patchy and inadequate. Activists are pointing out that although ICCs exist in some places, they often lack training, maintain no confidentiality, and fail to address workplace power imbalances. The next topic is NISAR satellite. This topic is important for your science and tech section. So, ISRO is planning to launch the NISAR satellite from Sriharikota on 30th July using the GSLV Mk2 rocket. So, NISAR is the world's first Earth observing satellite with dual frequency synthetic aperture radar. First is the L band radar, and then there is S band radar. NISAR's radar swath width is 240 kilometers, allowing it to scan large areas in one go. It offers a spatial resolution of 3 to 10 meters. Every spot on Earth will be revisited once every 12 days, providing consistent monitoring. NISAR is designed to support research and operations across six broad themes: solid earth processes, ecosystems, ice and snow dynamics, coastal and ocean monitoring, disaster response, agriculture and infrastructure. NISAR can also provide damage proxy maps within 5 hours. While NISAR will operate globally at the L band, ISRO will routinely operate the S band radar over Indian territory to enable enhanced biomass and soil moisture mapping, improved agricultural forecasting. So, all of this aligns with India's national needs in agriculture, disaster management, forestry, and rural development. Once launched, NISAR will be placed in a sun synchronous or polar orbit at an altitude of 747 kilometers. So the next topic is IRNSS. This topic is important for your science and tech section. ISRO will launch three navigation satellites for its Indian Regional Navigation Satellite System by 2026. So this IRNSS is India's independent regional navigation system, satellite system, also known as NAVIC. So IRNSS has been envisaged with the establishment of for the establishment of a regional navigation satellite system using a combination of geosynchronous orbit and geostationary orbit. So IRNSS NAVIC is designed to provide accurate position information service to users in India and the region extending up to 1500 km from its boundary. NAVIC is designed with a constellation of seven satellites and a network of ground stations operating around the clock. So the next topic is National Financial Reporting Authority. This topic is important for your governance section. So Nitin Gupta, the former chairperson of CBDT, has been recently appointed as the chairperson of the National Financial Reporting Authority. So National Financial Reporting Authority is an independent regulatory body and established under the Companies Act. Its primary role is to oversee and enforce compliance with accounting and auditing standards. It also aims to protect the interests of investors, stakeholders, and public by ensuring high standards in the financial reporting ecosystem. So, its functions and duties include recommending accounting and auditing policies and standards to be adopted by companies, monitor and enforce compliance with accounting standards and auditing standards, oversee the quality of service of the professions associated with enduring compliance with such standards. The Companies Act requires the NFRA to have a chairperson who will be appointed by the central government and a maximum of 15 members. They should have an expertise in accountancy, auditing, finance, or law. NFRA has the power to investigate either suo motu or on a reference made to it by the central government into the matters of professional or other misconduct committed by any member or firm of chartered accountants. It has the same powers as are vested in a civil court. The jurisdiction of NFRA for the investigation of CAs and their firms would extend to listed companies and large unlisted public companies also. Central government can also refer to such other entities for investigation where public interest would be involved. So the next topic is Scheme for Promotion of Culture of Science. This topic is important for your science and tech section. Union Minister for Culture has informed Rajya Sabha about the Scheme for Promotion of Culture of Science, which is a flagship initiative of Ministry of Culture. It is aimed at fostering scientific temper and awareness across the country for the public in general and students in particular. The scheme supports the establishment of science cities, science centers, innovation hubs, and digital planetariums in various regions. Under this scheme, science centers and
Digital planetariums are set up in areas with population of less than 5 lakhs. As of July 2025, a total of 27 science centers have been established across the country. Okay. So the next topic is United Nations Office on Drugs and Crime. This topic is important for your social issues. So, a recent report of the World Health Organization and the United Nations Office on Drugs and Crime has said that over the past 90 years, contaminated medicines have killed 1,300 people in the last 90 years. So, what is United Nations Office on Drugs and Crime? So, it was established in 1997. It's a global leader in the fight against illicit drugs and international crime, in addition to being responsible for implementing the United Nations led program on terrorism. So it works to educate people throughout the world about the dangers of drug abuse. It aims to strengthen international action against uh, illicit drug production and trafficking and drug related crime. It also works to improve crime prevention and assist with criminal justice reform. It relies on voluntary contributions, mainly from governments, to carry out its work. Its headquarters is located in Vienna. So the next topic is Comet. This topic is important for your science and tech section. So NASA's Hubble Space Telescope has captured the first detailed images of an interstellar comet. Comets are large objects made of dust and ice which orbit the sun. Comets are mostly found way out in the solar system. Some exist in a wide disk beyond the orbit of Neptune called the Kuiper belt. Other comets live in the Oort cloud, the sphere-shaped outer edge of the solar system, which is about 50 times farther away from the sun than the Kuiper belt. So the next topic is UAV launched precision guided missile V3. This topic is important for your security section. DRDO has successfully carried out flight trials of unmanned aerial vehicle launched precision guided missile V3 at the National Open Area Range, test range in Kurnool, Andhra Pradesh. So unmanned aerial vehicle launched precision guided missile V3 is a precision guided air to surface missile launched from drones and designed to strike targets with high accuracy while reducing risk to personnel. The missile is jointly developed by DRDO in collaboration with Bharat Dynamics Limited, Adani Group, and multiple MSMEs and startups under the Make in India initiative. It has a range which it has a maximum range of 4 kilometers during the day and 2.5 kilometers at night. Its weight is 5 kilograms, which enables integration with the lightweight drones. It can be fired in plain and high altitude areas. It has day and night capability and two-way data link to support post-launch target and aim point update. Okay. So these were our topics for today. We'll meet next time with new topics. Until then, goodbye and take care.